मेरा नाम स्टीव है। हम लोगों ने धमा चौकड़ी वेबिनार सीरीज़ के थ्रू एक सेशन किया था जिसमें हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे आप कुछ फ़ोटोज़ के थ्रू अपनी कहानी को बयाँ कर सकते हैं। सो दिस सेशन वाज़ ऑल अबाउट दैट एंड इसी सेशन में मैंने अपना भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने एक छोटी सी फ़ोटो स्टोरी तैयार करी थी, जिसमें मैंने एक सीरीज़ ऑफ फ़ोटोज़ करी थी और उनके थ्रू आप कैसे एक कहानी को बता सकते हैं। इस सेशन में हमने ये भी कवर किया है कि कैसे आप अपनी खुद की एक कहानी तैयार कर सकते हैं, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या होती है और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी, तो आइए देखते हैं। हेलो, मैं हूँ कैंची। मुझे कुछ ही दिनों पहले दुकान से इस नए घर में लाया गया है मेरे बाकी दोस्तों के साथ। आपके घर पे भी एक कैंची ज़रूर होगी, लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मैं एक ही जगह बस बैठी रहती हूँ। मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मेरा मन है कि मुझे भी कोई इस्तेमाल करे, मैं भी किसी के काम आऊँ। कभी मैं इस दीवार पे लटकी रहती हूँ, कभी मैं इन सब के साथ यहाँ पर पड़ी रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ इस्तेमाल हो। आखिरकार मेरा इस्तेमाल हो ही रहा है। मैं कागज काट रही हूँ। अब मैं सेलो टेप काट रही हूँ। मैं आपका काम काफ़ी आसान बना सकती हूँ। अब मैं कपड़ा भी काट रही हूँ। मैं बहुत फ़ायदे की हूँ। अरे बाप रे बाप, काफ़ी काम किया आज। मेरे को तो पसीने ही आ गए। लेकिन मुझे ये काम करने में मज़ा आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा इस्तेमाल हो। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी चीज़ में सहायता कर सकूँ। इन सब लोगों के साथ मिलजुल के काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अब मैं खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ही जगह पे बहुत दिनों तक बैठी रहूँ। मैं बहुत सारे काम आसान बना सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा इस्तेमाल हमेशा हो। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। थैंक यू। अगर हर बच्चा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर बनने की हम सोचें तो आई थिंक इन अ वे जो 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 आपने अभी वीडियो दिखाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑल्सो टू सी हाउ वुड यू मे बी स्ट्रक्चरली ब्रेक इट डाउन टू अराइव एट अ वीडियो ऑफ दैट काइंड बिकॉज मुझे ना उसमें बहुत से पहलू दिखे उसमें मुझे you also mentioned because I know for you it's a lot of this is involuntary. So Correct. to what extent were you conscious of some of those things? I don't know, Correct. but I saw a very clear contrast. जो कैंची का कलर था, it was even in the crowd it would constantly stand out. Correct. So I'm also wondering how would you have broken that process down to arrive? I mean, from what was the first thing? Was it the narrative informing the photograph? Was it photograph informing the narrative? Was it both? And I think for me this is something that I feel like it happens as a process which is very naturally to me, because of course I've been doing it for a while. But if I do think of it, what I'll do is I'll quickly do a share screen and just quickly talk about it. So if you look at this picture, this is a packed scissor, and I feel like I wanted to show that ये अपने friends के साथ एक दुकान में थी और आज वो इस घर में आई है. So I felt like in order to show friends, I could have put just these blue pens and that's it. Friends हो जाते, right? But I feel like for this scissor to stand out, if you throw in different variations of people as friends, one is a pen, one is a black pen, one is a sketch pen, and then there are these blades which are blades that you put into a cutter, right? So I feel like इससे एक variation आ जाएगा to the contrast of maybe even the kind of people that we have around us, to a little bit of that. So when I say मैं हूँ कैंची, hello, मैं हूँ कैंची, मुझे कुछ ही दिनों पहले दुकान से इस नए घर में लाया गया. now why I used this image over here कि मुझे दुकान से इस घर में लाया गया,
when I'm taking a picture of the top, it doesn't give me any context of what is the placement and where is this scissor. So the moment I put this image, I felt like it gives a little bit of a context. It still doesn't reveal everything, but it gives a little bit of context. Now it's at a table of somebody's house. There is a tape, there is a book, there is a small a glass bowl that has little bit of chits. So I feel like this contextualizes a little more. दुकान से इस नए घर में लाया गया है. And I feel like this angle helps. A top angle doesn't reveal so much, but a side angle to an extent gives a depth to your scene. Now there is much more depth and so much more visual absorption of things that you can have through this shot. It gives you a better perspective of the story and the scene that is happening right now. मेरे बाकी दोस्तों के साथ आपके घर पे भी ये कैंची जरूर होगी. So when I say आपके घर पे भी ये कैंची जरूर होगी, I wanted to put it into a situation where usually how in everybody's house where scissors are. Now we have made it very generic that how your scissor is how maybe my scissor is also, and it's just lying around with other stationery, right? So that's the image I wanted to use here to put it in context of how maybe scissors are in everybody's house. लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है. मैं जब से इस घर में आई हूँ, मैं एक ही जगह बस बैठी रहती हूँ. Essentially, जब ये बात करना शुरू करती है, जब ये अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है कि मेरी कहानी इससे अलग है, मैं एक्चुअली चाहता था कि मैं सॉफ्टवेयर में इसको धीरे धीरे जूम इन करने लगूँ into the face of the scissor. This almost starts to become like a face. Like there are two eyes and you know, it almost starts like it feels like it's speaking to you. I wanted to start zooming into it, but I didn't want to do that for the kids to overcomplicate it. But these are things that you can use as emotion when somebody is speaking to you. When you zoom into it, it seems to make the viewer more involved into what the person is saying. So that's something that I wanted to do, but I did not do it in this video. मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है. Now, why I took this angle? Because in the previous angle, I felt like there is only that much that you can see of what all stationery is really there. But when the scissor is talking about मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करता है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, I wanted to share a photo. I wanted to show a photo where it also shows all the different kind of stationery that can be of so much use basically. There are pens, there are cutter, there are batteries, there is a stapler, there's a sketch pen, there is a Fevicol, there's so many other stuff that you can use. And I wanted to contextualize that these are things that are made to use to make humans their work easier. So I wanted to use a photo like that to show that कैंची ये कह रही है मेरा तो कोई यूज करता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन सारी चीजों को लोग यूज कर रहे हैं बट इसका यूज नहीं कर रहे, या इन सारी चीजों का यूज है और क्या इन सारी चीजों का ठीक से यूज हो रहा है. Because I feel like we are now in a world where everything is available in abundance. We are no more in a world where things are scarce. We are in so much of abundance and we have everything in so much abundance that we actually forget to use the things that we are supposed to be for and how much to really use it and what to use it in. You know, we've forgotten that because there's so much that we have now. So I just wanted to give that sense of context to it. मेरे को कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है. मैं बहुत बोर हो रही हूँ. मेरा मन है कि मुझे भी कोई इस्तेमाल करे, मैं भी किसी के काम आऊँ. कभी मैं इस दीवार पे लटकी रहती हूँ. ये बहुत सिंपल है, मैंने दीवार पे कील पे कैंची को काट दिया जस्ट टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ लोनलीनेस कि मैं कभी इस दीवार पे लटकी रहती हूँ. मतलब इट्स टोटली लोनली, कोई से पूछ नहीं रहा है. द कैंची वांट्स टू डू समथिंग बट उसको करने को नहीं मिल रहा है. कभी मैं इन सब के साथ यहाँ पर पड़ी रहती हूँ. शी ऑल्सो डज हैव फ्रेंड्स बट शी स्टिल नॉट डूइंग व्हाट शी वांट्स टू, यू नो. मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ इस्तेमाल हो. हाँ, आखिरकार मेरा इस्तेमाल हो ही रहा है.
This is fairly simple. Also, but the way suddenly the music kind of Also the changed. music changes, yes, because now Yeah. there is some ray of hope, and now finally there is the scissors been getting to is being used now. So of course, yes, There's also an audio contrast suddenly, which there is also an audio contrast, correct. And it just कागज का changes the mood of the narrative. Now mentally you're actually your whole the notion of what you're looking at just totally changes with video. If you realize, I will also send this video to you guys. You'll also feel that there is whole emotion that changes with it, and now what you're telling, the sense of what you're telling totally changes, the context changes and everything. So it really helps. And आगे most of the video you've seen and उसमें photos कैसे हैं, you all know. The only thing that जहाँ मैंने वो पसीने वाला सीन किया, जहाँ कैची को पसीने आ गए, I wanted to do that in the day because अभी तक सब कुछ जो शूट हो रहा था वो इंडोर हो रहा था. But now suddenly to show a sense of stress, there was more light, there was a different lighting compared to a room lighting, and I wanted to put some water, shoot it in the sun to make it look like her job was very full of labor. So just to contextualize that a little bit, it helps. So yes. मेरा एक सवाल है स्टीव कि जी. जैसे अभी आपने जो हमें वीडियो दिखाया उसमें आपने बहुत सारी फोटोज, मतलब एक सब्जेक्ट के काफी सारे एंगल्स दिए और उसमें पीछे म्यूजिक भी डाला और उसको एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में हमको दिखाया. तो आप तो प्रोफेशनली एडिटर हो, Right. तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? First of all, in the process, I think if I talk about the ideating and conceptualizing process, I'll also touch that a little bit. In this case, especially, I think the first thing that came to my mind was a story. So once, and I'm sure you all know about it, but I'll still touch it a little bit. There is a little bit of the story that I designed in my head, and I knew that this is a story I want to tell. With that, I realized that these are the kind of images that I want to make with it. That ये सारी images मैं click करना चाहूँगा, और मैंने अपने आप को limit नहीं किया कि मेरी story में ये moment चल रहा है तो मैं यही photo लूँगा. I actually, if you see, maybe there are 10 to 14 photos that have made it to the video, but originally I maybe took 20 to 25 photos. So it's very important you take more of options, and then actually when you sit down and understanding and deciding कि अच्छा इस context में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी चल रही है या ये image ज़्यादा अच्छी चल रही है तो आप वो choose कर लेते हैं. So that is that. And also music wise, emotion क्या है moment का, I think that really matters, and it can help to emote what you want to through audio. So if you understand what your emotion is, you can choose the audio that way. Now as far as how do you edit is concerned, is there are many apps on the internet that you can find. There are free video editing softwares that you can find, like for example there is the Windows Movie Maker. The Windows Movie Maker can help you to put your clips together, also put your audio. It helps to stitch a video together in a very basic way, and of course the idea here is to put the content out. The content is king, not essentially what your visual representation is. That's not so necessary. Just a basic simple video that you can put together on Windows Movie Maker. As far as the phone is concerned, there is this app called Splice, SPLICE. That is another app that can help to put your videos together within the phone, because in case of laptop sometimes आपने phone पे video बनाया और उसको laptop पे लेके आना पड़ता है. That's a lengthier process. You can do it in your phone also. There is also this app called InShot, InShot. That's also another app जिसपे आप videos बना सकते हो, compile कर सकते हो अपनी videos को, and you can prepare a edit out of it. So yes, and also if there is any confusion to how to work through the app, there are very easy, very very good videos available on YouTube that you can quickly review and you can quickly have a look at it. It's nothing complicated at all.